Happy to be back. I'm sorry for the gap. Been 2 months. I've been not able to record, nor am I able to study for finance, and that's because multiple reasons: heavy workload, uh, been sick. You can guess that from my voice. Met with an accident, been broken for a few days now, but thought of getting back to work, back to normal, back to finance. So trying to do something new, but we'll finish what we started earlier. तो इथॉस लिमिटेड को अपडेट करेंगे 2024 का उनका फाइनेंशियल डाटा आ चुका है तो विल अपडेट इथॉस एंड वो अपडेट करते वक्त हाउ डू वी अपडेट द ओल्ड शीट इनटू अ न्यू मॉडल वो समझेंगे. नेक्स्ट एक और मॉडल करना है मेरे को. तो ऑयल एंड नेचुरल गैस मॉडलिंग अलग होता है थोड़ा नॉर्मल फाइनेंशियल मॉडलिंग से. तो विल स्टडी टुगेदर हाउ टू डू ऑयल एंड नेचुरल गैस मॉडलिंग. तो एक कंपनी है ONGC नाम से, इंडियन कंपनी, तो उसको मॉडल करेंगे. इथॉस स्टॉक हैज़ बिन डूइंग वेल. 1800 के आसपास इथॉस का स्टॉक था, 1600 के आसपास था इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था देखना. एंड मैंने ख़रीदा भी है. तो डिस्क्लेमर, आई हैव बीन होल्डिंग इट. आई हैव पर्सनल इंटरेस्ट इन द स्टॉक. तो इट्स बिन टू 3400 एंड इट्स नाउ डाउन टू 3100, बट 3100 से 3400 के रेंज में है फ़िलहाल. And our valuation also came in the same range. So I'm happy it has turned out to be a good investment. देखते हैं अभी वापस रिवैल्यूएट करेंगे. बेचा तो है नहीं फ़िलहाल, होल्ड करके रख रहा हूँ. नेक्स्ट वी हैव इज़, तो पाइथन सीख रहा हूँ मैं थोड़ा. स्टार्ट किया वो क्योंकि CFA लेवल 2 में उनका एक कोर्स है, फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग करके. तो आई हैव completed that course. It's been fun learning Python, learning new things, and now I'm more in love with Excel because pandas has been very tricky to me as of now. But yeah, learning new things is good. I'm thinking of starting data analytics course with Python. तो उस पर कोई अपडेट्स हो गए तो मैं 100% बताऊँगा. बट या you will be seeing me doing Python someday. And last we are starting with, we'll be starting Quant Finance introduction. The book name is Paul Willmott introduces Quant Finance. तो वहाँ से चालू करेंगे. I've known this book to be a good standard book for understanding basic quant finance. This man is well known to write his 3 books on quant finance. मतलब एक ही बुक है जिसके 3 पार्ट्स है. दोज बुक्स आर लाइक कॉस्टली, 20,000 का पूरा सेट है वो. तो उसके पहले वाली ये इंट्रोडक्शन वाली बुक है. तो विल बी स्टार्टिंग दैट एज वेल. I'll try to make videos and upload them as soon as possible and in a neat format. More precisely, I'll try to upload them in a sequence, or at least make a playlist in a sequence. And that's all.